हेलो गेमर्स, क्या हाल चाल। आयु कि आप तो लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पोको X6 Pro 5G में Bgmi ग्राफिक्स। साथ ही दोस्तों इस फोन का जायरोस्कोप कैसा वर्क करता है। सो गाइस, फुल डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो भाई लोगों जो अभी तक चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। क्यों दोस्तों, हम 500 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा नजदीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों ये फोन कितना FPS देता है और इसके जायरो प्रॉपर वर्क करता है और ये कितनी बढ़िया हमको गेमिंग करवा के दे देगा। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस फोन में मिलती है आपको 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट आपको 120 हर्ट्ज पर देखने को मिलता है। साथ ही इस फोन में मिलती है आपको 1800 नीट की पीक ब्राइटनेस और 5000 mAh की बैटरी, टाइप सी पोर्ट और 67 वाट का टर्बो चार्जर देखने को मिलता है इस फोन में। और दोस्तों बात करें इस फोन के रियर कैमरे की, तो दोस्तों इस फोन में आपको फर्स्ट कैमरा 64 MP का वाइड देखने को मिलता है। जो सेकंड कैमरा है वो आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है और जो थर्ड कैमरा है वो आपको 2 MP का मैक्रो देखने को मिलता है। इस फोन में आपको फ्रंट कैमरा 16 MP को देखने को मिलता है। अगर दोस्तों बात करें इस फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है। अगर दोस्तों बात करें इस फोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस फोन में मिलता है आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर है एक 5G लेटेस्ट प्रोसेसर है जो 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बनाया हुआ है। और दोस्तों ये जो चिपसेट है 3.35 ऑक्टा कोर पर आपको देखने को मिलती है। बात करें दोस्तों इस फोन के अतांतु स्कोर की, तो 1.4 मिलियन प्लस इसका अतांतु स्कोर देखने को मिलता है। दोस्तों जो इस फोन में चिपसेट लगा हुआ है ये काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। चलिए दोस्तों इस फोन की Bgmi ग्राफिक्स सेटिंग को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं इसकी Bgmi ग्राफिक्स सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पर आपको स्मूथ पर 90 FPS अवेलेबल दिखता है, मतलब कि दोस्तों आप इस फोन में स्मूथ पर 90 FPS की गेमिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब पहला मैच को स्टार्ट कर लेते हैं। इस फोन का 90 FPS कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match, let's go. Team has scored for the first time! Clear! Kill! Reloading! Enemy down! Target down! Nice shot! Cover me! Expired! Nice shot! Marked a location. Clear! Dead! Kill! Reloading! Enemy down! Reloading! Cover me! Kill! Blue team victory! The blue team has scored for the first time! Enemy down! Expired! Clear! Kill! Enemy down! Kill!
team victory. No mercy. Killing spree for the blue. Clear. Cover me. Expired. Clear. Enemy down. Reloading. Dead. Expired. Target down. Enemy down. Kill. Expired. Killing Blue team spree for the victory. blue team. The blue team has scored for the first time. Enemy down. Target down. Reloading. Kill. Cover me. Dead. Target down. Enemy down. The blue team is in the lead. Clear. तो भाई लोग काफी बंदों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा भाई इस फोन में जायरोस्कोप कैसा वर्क करता है। तो दोस्तों इस फोन में आपको जायरोस्कोप काफी बढ़िया प्रॉपर वर्क करता है। इसमें आपको कोई डिले देखने को नहीं मिलता है। तो वैसे इस फोन में आपको जायरो के लेंस से कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका भाई जायरो काफी ज्यादा प्रॉपर वर्क करता है और आपको कोई डिले देखने को नहीं मिलता है। और इस फोन ने गेमिंग काफी बढ़िया 90 FPS पर काफी बढ़िया स्मूथली काफी बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड की है। और दोस्तों जिन जिन लोगों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना यार, क्योंकि हम 500 के सब्सक्राइब के काफी ज्यादा नजदीक है।